I think all the six duty. So far I didn't make you write anything, ना? इसमें हमने अभी तक लिखा नहीं है. चलो, let's see if we can. So total 6 duties to inquire. I told you, right? 6 duties to inquire. I told you yesterday, right? What are the 6 duties to inquire? We have understood. First of all, एक था loans and advances. They should be properly secured, and terms and conditions should be regular. Second वाला क्या था? Personal expenditure shall not be debited to what? P&L account. And purchase and sale shall not be where which entries? Book entries. Bogus नहीं होनी चाहिए. And being a non-investment company, you are not allowed to sell your investments below your cost. If you remember that Motilal Oswal wala example. And fifth point में we understood that कि loans and advances shall not be categorized as what? Deposits. What is the basic reason behind that? Because in case we will be converting it into the form of what? Deposits. What is the major problem you have as an auditor? You will be hiding your income. And last but not the least, your paid up share capital should be fully received, or else if it is not received, you should have the genuine reason to explain to the auditor. ठीक है? तो आज एक काम करते हैं, पहले अपन लिख लेते हैं what we have done so far. उसके बाद we will proceed with the remaining part. ठीक है? So, or shall we complete another duty and write it at the later stage? हाँ, पहले लिखना है. Okay. Put the heading. What was the last topic we have noted? Section 139 to 140. Under that, right? Section number 141. Section 141. Section 141. Did we do all the qualification, disqualification, right? पूरा हमने 100% समझ लिया था. Section 141, under that disqualifications. Put the heading, disqualifications. 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 So disqualification में total कितने हैं भैया? Total 11 disqualifications we have. First one, what you are not allowed to form in India? You are not allowed to form what in India? Body corporate. So body corporate and company except LLP. Body corporate and company except what? LLP. Second point, officer or employee of the company. You are not allowed to be the officer or employee. You and your partner both. So when we are using this word, imagine that you and your partner, everyone is included. Wherever the relative is a part of your question, there I will make you write separately where the relatives part will come. Third point, in employment and in partnership with officer or employee of the company. In employment and in partnership with the officer and employee of the company. Next one, holding any security of any value. Holding any security of any value in the company. तो इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. In case of you or your partner holding any security, any value, immediate disqualification.
holding any security of any value, immediate disqualification. And here and in case of relatives, what is the limit everyone? और ये याद रखना, limit is for all the relatives, not per relative. Are you getting the point? Limit up to rupees 1 lakh of face value. And here also disqualification if breach is more than 1 lakh but attracts immediately or after 60 days? After 60 days. So it attracts after 60 days. Fifth one, you or your partner or your relative. यहां से अपने relatives वाले points will start. Indebtedness for goods and services. Indebtedness for goods and services. What is the limit everyone? Exceeding 1 lakh or exceeding 5 lakhs? Exceeding 5 lakhs. Same, you, your partner and relative. Here also indebtedness. But here instead of goods and services, it will be guarantees and securities. For more than 1 lakh. For more than 1 lakh. Seventh. What is your ceiling limit? 20 company audits, right? Breaching, or should I make you write everything about the ceiling limit which we discussed yesterday here itself only? यहीं पे लिखवा दो सब कुछ. Breaching or violating ceiling limit of company audit, that is more than 20 company audits. यहाँ पे लिखवा देता हूँ inclusions and exclusions. Do you remember the 4 exclusions and 6 inclusions? Inclusions में any public company, any government, any section 8, any joint audit, any guarantee company having share capital, and a private company whose paid up share capital turnover नहीं, paid up share capital is greater than equals to 100 crores. And exclusions में OPC, small, dormant, and a private company whose paid up share capital is less than 100 crores. Paid up share capital is 100 crores. Some notes. It's a limit of practicing professional. So non-practicing के केस में no limits. It is a limit of practicing professional. अच्छा, yesterday I forgot to discuss some questions with you relating to this point. Please give me the answer everyone. Just stop for a moment. Just try to give me the answer. Let's say for example there are 3 practicing professionals in my firm. Am I correct? And Mr. A, B and C तीनों practicing है. A is out of India, B is also out of India, only C is present. इसका मतलब what is the ceiling limit of this firm by the way? 60. So my question is whether the C can sign all. A इंडिया में है नहीं, B भी इंडिया में नहीं है, C अवेलेबल है ऑफिस में. सारे के सारे 60 clients came to your office and they are saying that Rohit please sign the audit report. मैं सिर्फ ऑफिस में बैठा हूँ. C, can I sign all? Answer is yes. अब जो मैं रीजन बता रहा हूं वो भी सुन लो.
जब आप सोल प्रोप्राइटर फॉर्म बनाते हो तो दैट इज योर लिमिट, बट व्हेन यू बिकम अ पार्टनर पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, इट इज नो लॉन्गर योर लिमिट नाउ, इट इज अ लिमिट ऑफ द होल फर्म। और जब भी हम लोग साइन करते हैं किसको, ऑडिट रिपोर्ट को, ऑडिट रिपोर्ट में कभी भी मैं ये साइन नहीं करता फॉर रोहित ग्रोवर, हम लोग साइन करते हैं फॉर एबीसी एंड को। व्हाट इज द नेम वी राइट, फर्म्स नेम, हम लोग फर्म का नाम लिखते हैं, उसके नीचे हु इज साइनिंग दैट डजंट मैटर। तो वंस यू बिकम अ पार्ट ऑफ द फर्म, नाउ 60 इज योर फर्म लिमिट, नॉट योर लिमिट ऑफ 20 नाउ। तो यस, सिंगल पर्सन कैन साइन ऑल द ऑडिट रिपोर्ट्स। डिड यू गेट द पॉइंट और नॉट? तो यही मैं तुम्हें नोट्स में लिखवा रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 1, note it's a limit of practicing professional. Point number 2, a single practicing partner, a single practicing partner can sign all audit reports, be it cost, be it company audit, or be it tax audit, wherever the limits is there. Either it is company audit or a tax audit. And एक और क्वेश्चन they may ask you on this question, ध्यान से सुनना, ठीक है? Now, is there a possibility of multidisciplinary firm? Yes or no? मैंने तो बताया था you can enter a multidisciplinary firm with the 8 professionals. Can you list down those professionals? CS, CA, or you can MBA, BE, BTech and all. उस केस में if they are your partners, whether their ceiling limit will be counted in your firm, answer is no. Ceiling limit is for the statutory auditor as well as the cost auditor. Did you get the point? That is not the ceiling limit of them. Secretarial audit की कोई ऐसी ceiling limit नहीं है, ठीक है? Now, third point, other than you, only your practicing partner can sign. अच्छा, कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ए बी सी, ध्यान से सुनो, 2 आर प्रैक्टिसिंग, सी इज नॉट प्रैक्टिसिंग, A and B who are practicing are outside India. C is available in the firm. He is a partner, but he is not a practicing partner. Can he sign? Why? देखो, एक practicing और non practicing CA CMA में difference क्या होता है? Both can do the audit, but only one can sign. Who can sign? The one who is holding a COP, जो practicing है. तो other than you, who can only sign everyone? Your PP can sign. What is PP? Practicing partner. चलो एक और complication डालता हूँ. ए बी एंड सी तीनों प्रैक्टिसिंग है, तीनों ही आउटसाइड इंडिया है, उनकी फर्म में एक डी है हु इज ऑल्सो अ सीए और अ सीएमए, एंड ही इज अ प्रैक्टिसिंग बट नॉट इन दिस फर्म. इन दिस फर्म ही इज एक्टिंग एज एन एम्प्लॉय, इन सम अदर फर्म ही इज अ पार्टनर एंड अ प्रैक्टिसिंग पार्टनर. नाउ कैन ही साइन इन योर फर्म? नो. फिर से क्वेश्चन विल रिमेन सेम. 2 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं. अदर देन यू हु कैन साइन? P and P. What is P and P? Your partner who is in practice. इसका मतलब ना तो आपका एम्प्लॉय साइन करेगा, ना आपका वो पार्टनर साइन करेगा जो कि नॉन प्रैक्टिसिंग है. तो अदर देन यू ओनली प्रैक्टिसिंग पार्टनर कैन साइन. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स विच आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द सीलिंग लिमिट. तो अपने टोटल 7 disqualifications are over. Now write 8th one. If you remember, 8th disqualification was relative disqualification. Can you help me in making a chart? मैंने तुम्हें क्या बताया था? Your relative can be an employee in your client company, but your relative should not be the officer or director or KMP. So let's make this chart. You or your partner, and here is your relative, and यहाँ पे employee और यहाँ पे ऑफिसर और केएमपी और डायरेक्टर. तो यू एंड योर पार्टनर आर डिस्क्वालिफाइड हियर ऑल्सो एंड डिस्क्वालिफाइड हियर एज वेल. अगर रिलेटिव एम्प्लॉय है तो ही यू आर व्हाट? क्वालिफाइड. बट इफ द रिलेटिव इज ऑल्सो ऑफिसर, डायरेक्टर और केएमपी, then in that case what? Disqualified. So this is how you have to remember this.
relatives disqualification. और यहाँ पे एक काम करते हैं, नोट लिख लेते हैं, relative की definition also you should know if you know 14 people. Remember? ठीक है? It starts with your spouse and your mother and father. Father plus stepfather, mother also plus stepmother. फिर relatively आता है brother plus stepbrother और इधर आती है sister plus stepsister. फिर आते हैं नीचे son plus stepson plus son's wife. Am I correct? और daughter के केस में only daughter, but stepdaughter is not there, only daughter's husband. Clear है? These are the 14 people which is in the definition of relative. तो father plus stepfather, mother plus stepmother, sister plus stepsister, brother plus stepbrother, son plus stepson plus son's wife, daughter plus daughter's husband. This is the definition of relative. Disqualification number 9. What kind of relationship you should not develop with your client? Business relationship. Do you remember that? Right? What B2B makes you disqualified or B2C? B2B. So you and your partner and relative, यहाँ पे भी तीनों थे, shall not establish business relationship with client. So इसको अंडरलाइन कर लेना एंड यहाँ पे लिख लो B2B disqualification, whereas B2C qualified. और ये भी तीनों के ऊपर है. रिमेंबर, यू आर इंक्लूडेड, योर पार्टनर इज इंक्लूडेड एज वेल एज योर रिलेटिव इज इंक्लूडेड. शैल नॉट एस्टैब्लिश बिजनेस रिलेशनशिप. इसमें एक और चीज लिख लेना, प्रोफेशनल रिलेशनशिप इज अलाउड. प्रोफेशनल रिलेशनशिप इज अलाउड. This is your 9th disqualification, and the 10th disqualification was, please tell me, if you were found guilty of fraud and the court found you, then what is the minimum ban? 10 years or imprisonment, whichever is later, right? You, your partner or your firm found guilty of offense of fraud by court and convicted for the same, and 10 years have not elapsed. तो यहाँ पे लिखेंगे 10 years, एक फ्रॉड वर्ड है एंड कन्विक्टेड, ये मेन पॉइंट्स है. यहाँ पे disqualification will be 10 years or service of imprisonment, whichever is later. 10 years or service of imprisonment, whichever is later. अच्छा ये बताओ 10 years कब से start होंगे? Will it be starting from the date when you were sent to the jail, or will it be starting from the date when you came out of the jail? जो ये 10 years का ban है, when it will start? When you were sent to the jail. Are you getting it? So don't wait for them to come out and then 10 years. Otherwise it would be that many years. He may not survive. Right? So 10 years will start from the date of conviction. So 10 years or service of imprisonment, whichever is later. And I think I also told you कि if you are being convicted by whom? NCLT, तो 5 years ban plus 447 का penalty.
तो you will be convicted for 5 years ban and 447 का penalty. And in case you are banned by whom? NFRA. Yes. NFRA के केस में 6 months to 10 years plus fine minimum 5 lakhs plus or minimum 5 lakhs maximum 10 times 10 times of remuneration received. ये हो गया NFRA का. But this point is completely relating to court, so don't get carried away by writing anything else. Write only court का point here. Okay, so this is completely dedicated to court. And if you remember, we have the last disqualification, providing prohibited services. Services under section 144. Can you tell me the list of those services? Point number 1, internal audit. Yes. Accounting system. Third, bookkeeping. Fourth, financial information system. Fifth, actuarial sciences. Sixth, management consultancy. Seventh, investment banking. Eighth, investment advisory. एक और थी यार टोटल. हाँ, आउटसोर्सिंग. यस, फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्सिंग. And 3 more I made you write. If you remember, pub में 10 मैं तीनों लिख देता हूँ in the 10. Portfolio management, underwriting, and brokerage. So these are the prohibited services under section 144. So we don't have 139 because 139 is for appointment of statutory audit. But we do have 140 में RR, both resignation and removal. आपका removal कौन करता है? Board of Directors. By passing a which resolution? Board resolution. Obviously after giving the opportunity of being heard. और resignation के case में if you are resigning, you have to mention the reasons of your resignation within 30 days of resignation to the company and ROC, failure of which you will be liable to a penalty of 50,000 rupees. मैंने तुम्हें बताया था ना, penalty was wrong in our material. तो 50,000 rupees or remuneration received whichever is lower, plus per day का 500 rupees subject to the maximum of 2 lakhs. चलो, put the heading section number 140. चलो एक काम करो, सॉरी अपने को qualification तो लिखा ही नहीं. We started with disqualifications. So put the heading qualifications. Qualifications में I already told you. What is the first one? You can open a sole proprietorship firm. याद रखना तीनों को ही फर्म बोलते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, LLP हो. They all are called as firm. Where a single professional holding COP. Second one is partnership firm. Partnership firm में you have 2 to 3 things to remember. Majority must be practicing in India.
there is no upper limit. What do you mean by there is no upper limit? Number of partners में. You can have as many partners you want. Yes, you can have a multi-disciplinary partnership firm as well. With CA, CS, LLB, MBA, actuarial scientist, BE, BTech, and BArc. With foreign professionals, not allowed. Do read the question carefully what the lawmaker is asking. अगर उन्हें पूछा कि कैन यू वर्क विद द फॉरेन प्रोफेशनल्स, यस, बट आप उनके साथ क्या नहीं एंटर हो सकते? पार्टनरशिप फर्म नहीं एंटर हो सकता. आप सीमा सीपीए के साथ काम करो, एसीसीए के काम से करो, चलता, लेकिन आप उनको अपना पार्टनर नहीं बना सकते. यू कैन मेक अ पार्टनरशिप विद देम. विद फॉरेन प्रोफेशनल्स नॉट अलाउड. What is not allowed? Partnership firm is not allowed. So there is no upper limit. Multidisciplinary and majority must be practicing in India. LLP के केस में I told you it should be Indian LLP. And note, in all cases, FRN to be generated. What is FRN? Firm registration number. I hope you know that कि आपका membership number different होता है. Firm registration number is different. That is your firm's identity and that is your identity. In all cases, FRN to be generated. Clear? This is called your qualification as well as disqualification. So now section number 140 को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. रेजिग्नेशन, रिमूवल. You already know about resignation. Resignation को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 140 subsection 2, 140 subsection 3. Duty to intimate reasons of resignation to company and ROC within 30 days of resignation. और इसका फॉर्म नंबर बता देता हूं. इन ADT 3 इसका फॉर्म नंबर है ADT 3 और टाइम पीरियड है 30 days. And what is 140 subsection 3 says? Failure of which? Failure of intimation. Then there is a 50,000 rupees of penalty with remuneration received, whichever is lower, plus 500 rupees per day, and this is total subject to not exceeding 2 lakhs. Failure of intimation में 50,000 with remuneration received, whichever is lower, plus 500 rupees per day, subject to the maximum of 2 lakhs. It was subject to the maximum of 5 lakhs actually. Recently 2022 जुलाई में चेंज हुआ है. From 5 lakhs it has been changed to 2 lakhs. और ये जो आपके मटेरियल में पेनल्टी लिखी है वो 2018 की पेनल्टी है. It has been already revised 2 times. Now removal में we all know the 3 answer. By whom? By board of directors, by passing board resolution, and by giving opportunity of being heard. This is what you mean by your section number 140.
So 139 not applicable to you, 139 में rotation not applicable to you, 141 we have done, 140 we have done, 142 remuneration, section 142 remuneration. If you remember कल हमने remuneration के बारे में पढ़ा था, depends upon audit committee. If your company is having audit committee तो recommendation कौन देगा? Audit committee. Approve कौन करेगा? Board of. And ratification देगा shareholder. And if there is no audit committee, recommendation approval by board, later on ratification by shareholders. So remuneration, if there is audit committee, other cases. If there is audit committee, then recommendation by audit committee, approval by board of directors, later on ratification by shareholders if there is a audit committee. And other cases में recommendation and approval by board and ratification by shareholders. So 142 is also over. Then we finally, तो अपना मतलब RRRR तो हो गया ना, RRR हो गया, रेजिग्नेशन, रिमूवल, रोटेशन आपको एप्लीकेबल है नहीं क्योंकि योर्स ऑडिट इज नॉट अ रेगुलर ऑडिट, इट इज नॉट ईयरली, देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ व्हाट रोटेशन. तो नाउ वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ 143 जिसमें हमने एक ही सेक्शन किया अभी तक, दैट इज 143 सबसेक्शन 1. ड्यूटी टू इंक्वायर और ड्यूटी टू इंक्वायर, एन और इन. फर्स्ट पहले क्या आता है? इन. अगर अपने को नहीं मिला आंसर तो इंक्वायर. क्लियर? यस. पॉइंट, इसमें टोटल 6 केसेस है. राइट इट इन अ शॉर्टर वे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम क्या है वो लिख लेते हैं, ड्यूटी टू इंक्वायर. whether loans and advances granted properly secured, proper terms and conditions. Second, whether sales and purchase are mere book entries, that is checking, bogus or fake sales and purchases. Then C, whether personal expenditures debited to revenue or P&L statement. You have to check that. And D point, whether loans and advances
categorized as deposits. अच्छा वाइस वर्सा हो तो भी कोई दिक्कत है? If deposits are categorized as loans, we don't have any problem. But loans should not be categorized as deposit. That will be a clear-cut case of hiding of income. If E being non-investment company, investments in shares and securities shall not be disposed or sold below its cost. And F, whether paid up share capital is fully received or not. So these were the 6 cases which we did. Done everyone? So what we have done in the previous class till previous class we have already noted down now. Okay? So let's proceed with the next section which we have still writing. मैं फास्ट हूं या तुम स्लो? बहुत। अरे मेरे को पता नहीं कितने साल हो गए सर, मैं तो हर साल लिखता हूँ ये एवरी 6 मंथ्स, तो आदत हो गई है लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के। बट आई होप राइटिंग थोड़ी मैनेज कर लेना, अप एंड डाउन है थोड़ी सी, तो यू कैन मैनेज, क्योंकि मेरा AOEI सब सेम दिखते हैं, MUN सब सेम दिखते हैं, तो मैनेज कर लेना है सेंटेंस के हिसाब से व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। ठीक है, चलो। सो कभी भी जब आप कॉपी करते हो ना, एक टेक्निक बताता हूँ हाउ यू कैन बी फास्ट इन राइटिंग। जब व्हेन यू सी समथिंग इन कॉपी ना, देन ट्राई टू रिटेन द फुल सेंटेंस इंस्टेड ऑफ वन वर्ड। अब जितनी बार मुंडी ऊपर नीचे करोगे ना, उतनी बार यहाँ पे दर्द होगा, तो एक बार करो, सेंटेंस पढ़ लो, अच्छा पूरे सेंटेंस से लिख लो, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर्स, क्योंकि कॉपिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, सीरियसली। डू यू अग्री? एग्जाम में इफ यू आर नॉट आर्टिस्ट यू कांट कॉपी, कॉपी भी एक आर्ट है। चलो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक एवरीवन, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3। बहुत ही सिंपल टॉपिक है सर, 143 सबसेक्शन 3। ये हो गया क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशंस, रेजिग्नेशन, रेम्युनरेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज में फर्स्ट वन इज ओवर, एंड नाउ वी आर ऑन सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11। 5 6 9 10। अच्छा लाइन से दिया हूं इन्होंने, चलो अब मैं ओके मेक अ नोट अलोंग विद मी एवरीवन। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा सेक्शन के बारे में बता देता हूं होता क्या है। लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली एज वेल कि हाउ ऑडिट रिपोर्ट एक्चुअली लुक्स लाइक, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि ऑडिट रिपोर्ट होती कैसी है। देखो ये रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट है, दिस इज द रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट, दिस इज हाउ योर ऑडिट रिपोर्ट लुक्स लाइक। ऑब्वियसली लेट मी रिमूव दिस ऑल। ये होती है ऑडिट रिपोर्ट, ऐसी होती है एक्चुअल में, विच वी गिव इट ऑन द कंपनी। जैसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, वी कॉल इट एज अ टाइटल। व्हाट डू वी कॉल इट एज? टाइटल। एंड वी ऑलवेज रिपोर्ट इट टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मेन पैराग्राफ, अपनी पूरी रिपोर्ट का सबसे मेन पैराग्राफ होता है ये, व्हाट इज द नेम? ओपिनियन।
Now why I am showing the report, क्योंकि the section which we are going to do now 143 subsection 3 is actually a part of your audit report. इसे बोलते हैं OLRR section. What is the name? What is the OLRR का मतलब other legal regulatory requirements. जैसे देखो, what is the section number you can see over here? The section is 143 subsection 3. अभी देखो इसका just a sentence पढ़ो, क्या लिखा, मतलब what the auditors are saying, we have sought and obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of. ये बहुत ही सिंपल पैराग्राफ है. इसमें ऑडिटर इज गिविंग अ डिक्लेरेशन दैट कि वट एवर आई वॉन्टेड टू चेक एंड वट एवर आई वॉन्टेड टू गेट एन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन वी हैव रिसीव्ड इट. एज सिंपल एज दैट. रीड द सेकंड पॉइंट. In our opinion, proper books of accounts as required by the law has been kept by the company. तो यहाँ पे cost auditor भी क्या बोलेगा? Proper cost records as per the required by the law as per CRA1 form has been prepared or not. तो either you are a practicing CA or you are a practicing CMA. तुम्हारी रिपोर्ट में ये पैराग्राफ कॉमन होता है. इसे हम लोग बोलते हैं सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3. एक्चुअली इन रिपोर्ट वी कॉल इट एज OLRR पैरा. इसका एक्चुअल नाम है ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन सर्टेन मैटर्स. व्हाट इज द नेम? अब देखो सेम चीज आई विल शो यू इन योर मटेरियल आल्सो. यू कैन सी दैट इन योर मटेरियल दिस इज वेयर सेक्शन नंबर 140. ये पढ़ो पॉइंट नंबर 1 क्या है? Whether we have sought or obtained all the information which to the best of his knowledge or belief were necessary for the purpose of his audit. If not, detail. Same point. Second point क्या था वहां पे? Books of accounts. देख लो वही है. Whether in his opinion proper books of accounts are required. Like that अपने को A to J clauses है. How many? तो अपना सेक्शन नंबर है 143 सबसेक्शन 3. उसके अंडर वी हैव टू डू द A to J clauses. How many clauses? और इसमें जो J clause है which is not unfortunately provided in your provided है बट लिखा क्या हुआ है? Other matters. Actually J clause में आई हैं 6 amendments. How many amendments? And to avoid the amendments they have written this word. What is the word? Such other matters. तो अब तुम मुझे बताओ, do you want those amendments? Then I will tell you. क्योंकि मेरा तो CA फाइनल CMA फाइनल ऑडिट दोनों ही चलता है, क्योंकि वहां पे तो हम लोग पढ़ाते हैं डिटेल में. यहाँ पे अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि शुड आई टेल यू दैट अमेंडमेंट, विल इट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम और विल इट बी अ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम. तो वो मैटर करता है. बट योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यू नेवर नो. CMA इंस्टीट्यूट में आस्क यू दोस अमेंडमेंट्स एज वेल. तो ये J क्लॉज में जो सच अदर मैटर्स है आई विल मेक यू राइट सेपरेटली. ठीक है. तो that will be your call whether you want to do it or don't want to do it. But यहाँ पे when I saw this, they simply wrote the word such other matter. Actually उसमें 6 amendments है. So that I will make you right. तो total A to J मतलब 10 clauses we have to learn under section 143 subsection 3. How many clauses we learned in 143 subsection 1? 6. Just now we have done. और यहाँ पे कितने करने हैं? 10. मैं बहुत अच्छे में simple way में लिखवा देता हूँ so that it will be easy for you. So just put the heading. Section number 143 सबसेक्शन 3. इसे मैं तुम्हें बताता हूं कि हाउ डू वी नीड टू राइट दिस सेक्शन. इफ यू आर राइटिंग दिस सेक्शन इन रिपोर्ट, इफ यू आर राइटिंग दिस सेक्शन इन ऑडिट रिपोर्ट, तो ये सेक्शन का नाम है OLRR सेक्शन, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पैरा. वी कॉल इट एज OLRR पैरा, other legal and regulatory requirements para. OLRR para बोलते हैं. लेकिन the same thing when we are doing in company audit chapter, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी to report on certain matters. इसमें है क्लॉज नंबर A to J. These are the clauses in this section. ठीक है. क्लॉज नंबर A to J. सिंपल क्लॉजेज है,
and as and when we'll finish up the clauses, I'll make you understand the meaning as well. So other legal and regulatory requirements. Other legal and regulatory requirements. It is called OLRR para. तो रिपोर्ट में हम लोग इसे OLRR बोलते हैं, बट कंपनी ऑडिट चैप्टर में यू आर गोइंग टू कॉल इट एज ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन सर्टेन मैटर्स. नाउ certain matter number A, and try to remember that in clause manner only. Don't write 1 2 3 4 in the examination, it may deduct your marks. So it is clause number A. Clause number A में हम लोग क्या बोल रहे हैं? Whether information and explanation received from company as to our knowledge and belief. If knowledge and belief, if not, what is its impact on financial position? What is its impact on financial statements of company? First make a note, then I'll explain you what is the meaning. अच्छा मेरे को ये बताओ, when the auditor does the audit, what does the auditor expect from the client? कि whatever the information and explanation I am asking, you should provide or you should not provide? Should provide. But if you have provided me, I will give a positive opinion in this paragraph. जैसे अभी रिलायंस के ऑडिटर ने क्या लिखा, अब मेरे को ये बताओ, ये रीडिंग, जस्ट रीड दिस प्रॉपर हेडिंग एंड प्लीज टेल मी व्हाट इज द implication you are saying. What Reliance auditors are trying to tell you? We have sought and obtained. What are they saying? Positive or negative? Got it. So we have sought and we have also what? Obtained the information and explanation which to best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit. लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि what if the management has not provided you? तब आप क्या करोगे? In case the management has not provided you, then you have to show its impact on the financial statement of the company. Let's say for example, I told my client, let me take you to, you please take me to your godown. I want to check your inventory. मेरे को आपके गोडाउन लेके चलो, मेरे को आपका इन्वेंट्री चेक करना है. उन्होंने बोल रहा है सर कल जाएंगे, मैंने कल पूछा, उन्होंने बोला सर परसों जाएंगे, परसों पूछा, एंड डेली ही इज नॉट पोस्टपोनिंग द थिंग्स. अब तुम मुझे बताओ, इज इट समथिंग ही वांट्स टू टेल और ही वांट्स टू हाइड? मतलब कुछ तो गड़बड़ है. तो यहाँ पे अपन पॉजिटिव रिमार्क्स देंगे या नेगेटिव? इसीलिए लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया कि इफ नॉट, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. क्लियर है? सॉर्टेड. क्लॉज नंबर ए. क्लॉज नंबर बी, whether books of accounts and cost records are properly maintained or not. Whether the books of accounts and cost record, आपको सिर्फ मेन कीवर्ड्स याद करने हैं एंड सेंटेंस फॉर्मेशन आई नो दैट यू कैन डू इट. अब यहां पे हम लोग सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? सेकंड पॉइंट में आई एम गिविंग एन एक्सप्रेशन कि आई चेक द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड आई चेक द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स, दे आर प्रॉपरली मेंटेन्ड और नॉट. दैट यू हैव टू एक्सप्रेस. सी क्लॉज, वेदर ब्रांच रिपोर्ट्स रिसीव्ड और नॉट. सिंपल, बहुत छोटे छोटे क्लॉजेस हैं. तो सी पॉइंट इज ऑन ब्रांच रिपोर्ट्स. तो से फॉर एग्जांपल, अगर आपके क्लाइंट के ब्रांचेस हैं, तो ऑब्वियसली बीइंग अ हेड ऑफिस ऑडिटर, हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल, ब्रांच ऑडिटर और हेड ऑफिस? तो यू हैव टू इंश्योर दैट कि ब्रांच रिपोर्ट्स हैव बीन रिसीव्ड बाय यू. दैट इज क्लॉज नंबर सी. क्लॉज नंबर डी, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन अग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आप घर पे जाके थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करना कि अपने क्लॉजेस, आपको सारे क्लॉजेस आपको सीक्वेंस में दिखेंगे और ये आपको ABCD सीक्वेंस में ही लर्न करने हैं. यू कांट राइट द क्लॉज नंबर 4 इन A. तो D इज अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, A इज अबाउट इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, B इज अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, C इज अबाउट ब्रांच रिपोर्ट. ये आपको क्लॉज टू क्लॉज मैच करना. डिड यू गेट द पॉइंट? तो इन द एग्जामिनेशन दे मे आस्क यू कि व्हाट इज द ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज I.
तो आपको आई क्लॉज का आंसर लिखना पड़ेगा। तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज, कैन एनीबडी टेल मी? मैं बहुत सिंपल वे में पूछता हूं, व्हाट डू द कंपनी प्रिपेयर थ्रू आउट द ईयर? Books of accounts. And what do they prepare on the balance sheet date? Financial. What is prepared from what? Financial statements are prepared from books of accounts. पहले books of accounts बनती है, बाद में क्या बनती है? Finance. तो what should be in agreement with what? Financial statement should be in agreement with books of accounts. वही पॉइंट हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि I have checked and whether the financial statements are in agreement with books of accounts or not. Right? E clause. Whether financial statements are prepared in accordance with accounting standards. Whether financial statements are prepared in accordance with accounting standards. You all know that standards on auditing we follow to do the audit, but financial statements must be prepared as per accounting standard. Let me ask you one thing. मेरे को ये बताना, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसी होती है? AS2. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10. ठीक है, इन्वेस्टमेंट की AS13. तो एवरी सेट ऑफ आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन कंप्लायंस ऑफ विच स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग. ऑडिटर इज चेकिंग दैट, और ये सेम पॉइंट मैं आपको रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट में भी दिखाऊंगा लेटर ऑन. तो डिड यू अंडरस्टैंड द ई क्लॉज? एफ क्लॉज, वेदर एनी adverse or negative remarks on company's functioning has been given. What do you mean by this point? This point is on adverse and negative remarks. इसको ध्यान से सुनना. हम लोग जी किस कंपनी का जब ऑडिट करते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ उनका फाइनेंशियल्स चेक नहीं करते, हम लोग उनकी फंक्शनिंग भी चेक करते हैं. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इमेजिन करो यू आर डूइंग एन ऑडिट ऑफ अ बैंक, और बैंक में 45 कैमरास इंस्टॉल्ड है, उसमें से सिर्फ 7 and 8 आर ओनली वर्किंग, रिमेनिंग 35 to 38 कैमरास आर नॉट वर्किंग. इज इट अ साइन ऑफ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और अ पुअर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? तो ऑडिटर क्या करेगा? पॉजिटिव रिमार्क देगा या नेगेटिव? वही पॉइंट दे रहे हैं हम लोग. वेदर एनी एडवर्स और नेगेटिव रिमार्क्स ऑन कंपनीज functioning has been given. E F G clause. Now G clause is relating to directors. Whether any director has been disqualified under section 164 subsection 2. Now this is the time I should ask you. I think तुम्हारे कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स टॉपिक पृथ्वी सर ने करवाया होगा आपको. डायरेक्टर्स में इफ यू रिमेंबर देयर इज सेक्शन नंबर 164 विच इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन. वो डिस्क्वालिफिकेशन में भी दो तरह की डिस्क्वालिफिकेशन है. पहली जनरल है, दूसरी स्पेशल है. स्पेशल में अपना होता है कि इफ यू आर अ कंपनी एंड यू हैव नॉट फाइल्ड योर एनुअल रिटर्न्स and financial statements for continuously 3 years and you were a director during that time of default, you will be disqualified to be a director in any company for the next 5 years. और एक था, if you fail to repay your public deposits and debentures and dividend for the continuously 1 year and you were a director during that default, again you will be disqualified to be a director in any company for the next. That disqualification we are talking about, not the first one. एक और डिस्क्वालिफिकेशन है तुम्हारे, इफ इज अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, कॉल्स आर नॉट पेड फॉर 6 months. हम लोग उसकी बात कर ही नहीं रहे, हम लोग ये स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 की बात कर रहे हैं. तो आई एम आस्किंग माई क्लाइंट, क्या आपका कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2? दैट आई एम आस्किंग इन क्लॉज नंबर जी. क्लॉज नंबर H, वेदर any adverse remarks have been given on books of accounts of the company. The difference between F and H, it is clearly noted. Understand, F में I am talking about adverse remarks on functioning of the company. यहाँ पे I am talking about adverse remarks on
बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब आया आई क्लॉज, इसको स्टार मार्क डाल लो। दिस इज ऑल्सो सो मेनी टाइम्स हैव बीन आस्क्ड, वेदर client or whether the company, you can write company, has installed an efficient and effective IFCS, internal financial control systems. But one more important thing other than this which you should know, that this clause is not applicable to OPC company, it is not applicable to small company, and it is not applicable to that company whose turnover is less than 50 crores and whose borrowings are less than 25 crores. ये याद रखना, आई क्लॉज ये कंपनीज के अंदर ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आएगा, तो आई क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, तो ये नॉन एप्लीकेबिलिटी है। दिस इज द नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द आई क्लॉज। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ओपीसी, not applicable to small, and not applicable to those companies whose turnover is less than 50 crores and borrowings are less than 25 crores. ये सारे clauses आपको again and again repeating आपको sequence में learn करने हैं. You have to learn it in sequence. तो अब बताओ quickly, clause A किसके बारे में था? Information and keywords याद करो आप. Sentence formation, I know that you are expert in that. You will do it. Main क्या है? Keyword which you want to show it to the examiner. So what is the first one? Information and explanation. Second one, books of accounts. Third one, branch audit reports. Fourth one, financial statements in agreement with books of account. Fifth one, financial statements must be prepared as per accounting standard. Sixth one, adverse remarks on functioning. Seventh one, any director disqualified under section 164 subsection 2. Eighth one, adverse remarks on books of accounts. Ninth one, इंस्टॉलेशन ऑफ आई। तो आई और आई दोनों मैच कर लो, तो 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई इज इक्वल टू IFCS, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम। और ये क्लॉज किन कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है? अगर आप ओपीसी हो, स्मॉल हो, और एनी अदर कंपनी whose turnover is less than 50 crores and borrowings are less than। अब आया अपना मेन क्लॉज, जे क्लॉज। लेट मी राइट इट इन लाइक पूरे रेड कलर में लिख देता हूं, अमेंडमेंट है पूरी, ठीक है। तो जे क्लॉज लिख देते हैं, पूरी अमेंडमेंट है। इसमें टोटल 6 सब क्लॉजेस है, इसको हम लोग अदर मैटर्स बोलते हैं एज पर योर मटेरियल। अदर मैटर्स के अंदर आपको कौन से 6 मैटर्स के ऊपर रिमार्क्स देना है? ए, इंपैक्ट ऑफ pending litigations on company's financial position. B, पहले लिखवाता हूं 3, I will explain and then remaining 3 I'll explain. B, provisions on derivative contracts. And C, delay in transferring unpaid dividend amount to IEPF, Investors Education and Protection Fund. Delay in transferring unpaid dividend amount to IEPF. Okay, so total 6 sub clauses are there in other matters. Let me tell you the clause number A. ध्यान से सुनना। सुनो, how many of you know about the meaning of contingencies? क्या होती है contingencies? Which may happen, may not happen. But
डू द कंटिंजेंसीज इंपैक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी? यस, हमने AS-29 में क्या पढ़ा हुआ है कि when you have a little bit of certainty on contingencies, when you know that कि some of your pending cases you are going to lose and you know that you are going to lose, what is the implication? You have to start making the provisions for the same and you have to stop showing it under the contingent liabilities, you have to start showing it as an actual liabilities. तो हम लोग वही चीज अपने क्लाइंट से पूछ रहे हैं. रीड द पॉइंट नंबर 1. Impact of which litigations? Pending litigations on companies what? Financial position. चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं. लेट्स से फॉर एग्जांपल अमूल इंडस्ट्रीज की कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो. अब अमूल के ऊपर किसी बंदे ने 2800 करोड़ का कॉम्पनसेशन क्लेम का केस किया हुआ है एंड अमूल कंपनी नोज दैट कि दे आर गोइंग टू लूज दिस केस. वो केस वो खत्म हो जाएगा. दे विल डेफिनेटली lose that case. What is the accounting treatment you want Amul Industries should have done? Should it be still considered as a contingent liability or they should show it as an actual liability? When you know that there's a certainty you are not going to win the case, you are going to lose the case, there's no point of still continuing as a which liability? तो वही तो मैं क्लाइंट से पूछ रहा हूं कि जो भी आपके contingent liabilities हैं, did you show the impact of each and every of your contingent liability on the company's financial position? That is what my point number A. Read the point number A again. Impact of pending litigations on the company's financial. Point number 1 समझ में आया? Point number 2. I think in your SFM हो गया ना तुम्हारा? ये तो पता ही होगा आपको क्या होते हैं. Derivative contracts. Derivative contract future forward contracts होते. तो are they certain or uncertain? तो जब अपने को पता है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, डोंट यू थिंक दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड विद द प्रोविजंस? जैसे बैड डेट होता है. अब बैड डेट अपने को मालूम है ईयर एंड पे पता चलेगा कितने डेटर्स आर इररिकवरेबल, बट डू वी स्टार्ट प्रोवाइडिंग द बैड डेट्स इन द बिगिनिंग और नॉट? हम लोग एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. जो बैड डेट होता है उसको वहां से एडजस्ट कर लेते हैं. तो इट मींस वी शुड बी प्रोएक्टिव और वी शुड बी रिएक्टिव? प्रोएक्टिव. वही मैं कंपनी को बोल रहा हूं कि वेयर इज योर प्रोविजंस ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट्स? आपको मालूम है अगर तो फ्यूचर में सब कुछ स्मूथ गया तो यू विल विन द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, इट विल कम इन योर फेवर, यू विल मेक द प्रॉफिट. बट व्हाट इफ इट द मार्केट विल बिकम बेरिश या बुलिश होगी? अकॉर्डिंगली अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की है और मार्केट बुलिश होगी तो आपका नुकसान हो जाएगा. और आपने नॉर्मल परचेज किया और मार्केट क्या होगी? बेरिश, तो भी आपका नुकसान होगा. तो इट्स बेटर दैट टिल द टाइम इट इज नॉट सर्टेन, टिल दैट टाइम यू शुड हैव स्टार्ट क्रिएटिंग व्हाट? प्रोविजंस फॉर द सेम. So that is what my question to the client. What is my third question? आपने डिविडेंड चैप्टर करा है. डिविडेंड में आपने बताया होगा कि डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज. 30 डेज के अंदर जो भी अनपेड डिविडेंड होता है उसे हम लोग अनपेड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, विच इज केप्ट इन दैट अकाउंट फॉर 7 ईयर्स. 7 ईयर्स के बाद हम लोग उसे IPF में ट्रांसफर करते हैं, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड. वो कितने दिनों के अंदर ट्रांसफर करते हैं? 30 डेज के अंदर. हाउ मेनी डेज? वही चीज पूछ रहा हूं. इज देयर एनी डिले इन ट्रांसफरिंग द अनपेड डिविडेंड अमाउंट टू द विच फंड? 7 ईयर्स के बाद कंपनी ये पैसा अपने पास नहीं रख सकती, कंपनी को गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना होता है अंडर इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड विद इन हाउ मेनी डेज? तो मेरा क्वेश्चन ये है कंपनी को पूछने का कि आपने कुछ डिले किया या नहीं किया. अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाता हूं ये कहां पे होते हैं. ये देखो, ये रिलायंस की रिपोर्ट है ना, ये आप ये पढ़ो, ये पॉइंट पढ़ो. कंपनी हैज डिस्क्लोज द इंपैक्ट ऑफ पेंड. इसका मतलब यहां पे ऑडिटर क्या बोल रहा है? हाँ, मैंने चेक किया है, कंपनी इज डिस्क्लोजिंग द इंपैक्ट ऑफ व्हाट? पेंडिंग लिखा. तो इज इट अ पॉजिटिव रिमार्क और नेगेटिव? पॉजिटिव. मैं तुम्हें क्वेश्चन फॉर्मेट में क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल आंसर कर रहे हैं, ये बंदा रिपोर्ट कर रहा है, तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है जब आप रिपोर्ट करते हो. तो अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या था अपना? ये देखो, this is the second point. Read this. Company has made provision required under applicable law accounting standard for material foreseeable losses if any on the long term contracts including. Correct है. और मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या था आपको? आइए देखो, there has been no delay in transferring the amounts required to be transferred to investor education and protection fund except 1.76 crore which is held in abeyance. आपने सेक्शन नंबर 126 भी हो गया होगा कि वो डिविडेंड जिसके ऊपर ओनरशिप के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है कि ये डिविडेंड इनका है या इनका है, दैट डिविडेंड कंपनी कैन कीप, बट द रिमेनिंग डिविडेंड विच इज अनडिस्प्यूटेड
has to be transferred within 30 days after the completion of 7 years to the which fund? Investors Education and Protection Fund. तो ये रियलिटी में हम लोग रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट करते हैं. These are the various clauses which you definitely do in reporting. तो मैंने तुम्हें I clause में three points I have told you. Now D point पहले समझ लो, फिर सुनना, फिर लिखना. ध्यान से सुनो. मैं अपने क्लाइंट के पास गया. मैंने अपने क्लाइंट से पूछा, लिसन टू मी केयरफुली, डिड यू लोन एनीबडी और डिड यू फाइनेंस एनीबडी? व्हाट डज दैट मीन? क्या आपने किसी को लोन या किसी को फाइनेंस दिया है टू अ पार्टी अदर देन दोज पार्टीज विच यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइंट का नोट्स टू अकाउंट्स वेरीफाई किया, उसमें 10 पार्टीज नेम हैज बीन गिवन टू whom the client has given a loan. These are disclosed loans or undisclosed? Disclosed. मैं पूछ रहा हूं undisclosed loan के बारे में. मैंने पूछा other than those 10 parties, did you give any loan or did you give any finance to any other party which you have not disclosed in notes to accounts? मेरे suppose my client is saying no. Again I'll ask कि did you give, or he's saying no. Okay, give me in writing. गिव मी इन, मेरे को ये एविडेंस राइटिंग में चाहिए. उसे बोलते हैं MRL, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर. व्हाट डू वी कॉल इट एज? तो ऑडिटर मैनेजमेंट से MRL पूछ रहा है कि मेरे को रिटर्न में डिक्लेरेशन दे दो, आपने किसी और को लोन नहीं दिया. यू हैव नॉट गिवन द लोन टू एनीबडी अदर देन दोज पार्टीज विच आर ऑलरेडी मेंशन्ड इन नोट्स. होगा. ये हो गया क्लॉज नंबर डी का अंदर का ए पॉइंट. डी में भी 3 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनो. फिर मैंने वाइस वर्सा क्वेश्चन भी पूछा. व्हाट इज वाइस वर्सा? डिड यू टेक एनी लोन फ्रॉम एनी पार्टी अदर देन विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन? उन्होंने बोला नहीं, आई हैव टेकन द लोन्स, दोस पार्टीज आर ऑलरेडी मेंशन्ड. मैंने कहा श्योर ना? उन्होंने बोला श्योर. मैंने कहा एक काम करो, गिव मी इन राइटिंग. यहां पे भी एक MRL गिवन पे और एक MRL रिसिप्ट पे और एक क्लॉज नंबर C इन द डी कि व्हेन यू रिसीव द MRL ऑन गिवन एंड taken loan कि company has not given, do you have now any reason to doubt on it or there is no reason to doubt? आपने एविडेंस पूछा, उसने एविडेंस दे दिया. आपने ओरल पूछा है रिटर्न में, he gave you the MRL or not? After getting the MRL, still you doubt your client or you don't have a reason to doubt? You don't have a reason to doubt. वो आप लिखोगे थर्ड पॉइंट पे. As I have received MRL on the A and MRL on the B, therefore in the C point you are writing I have no reason to doubt on the A and B matters above. ये होता है D clause. That is called which clause? D clause. तो write the D clause. इसको अपन further classify करेंगे 1 में. Obtaining management representation that management has not financed or loaned any other party other than mentioned in notes to accounts. Other than mentioned in notes to accounts. तो please tell me, is it outflow वाला point or inflow वाला? Outflow. Main point is management has not financed or loaned. मतलब you have not given any loan to somebody other than which parties? Other than mentioned in notes to accounts. Now please tell me what was the second point? Obtaining management representation that management has not borrowed any loan from any other party other than mentioned in notes to accounts. Other than mentioned in notes to accounts. So here has not borrowed other than mentioned in notes to account. And what is the third declaration?
Auditor has no reason to doubt. Auditor has no reason to doubt on 1 and 2 case above. Auditor has no reason to doubt on case number 1 and case number 2 above. Clear? ये अपना डी क्लॉज था और ई क्लॉज सिंपल है बहुत. डिविडेंड इज पेड एंड डिक्लेयर्ड एज पर सेक्शन नंबर, कोई बताएगा सेक्शन नंबर 123. डिविडेंड इज पेड एंड डिक्लेयर्ड एज पर सेक्शन नंबर 123. दिस इज योर डिक्लेरेशन इन क्लॉज नंबर ई. और ये जो क्लॉज नंबर एफ है वो एक्चुअली अभी रिसेंटली दिसंबर मंथ में अमेंड हुआ है, ये दिसंबर मंथ में. तो ये एप्लीकेबल है 1/4/2023 से एप्लीकेबल है. एवरी व्हाट इज द क्लॉज नंबर एफ? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर has feature of audit trial or not. Actually, from 1/4/2023 onwards, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक रूल बना दिया. क्या रूल? कि अगर आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो एज अ कंपनी, चाहे आप टैली यूज कर रहे हो, आई होप यू हैव हर्ड ऑफ टैली. अगर आप टैली यूज कर रहे हो, सैप यूज कर रहे हो, ईआरपी यूज कर रहे हो, बान यूज कर रहे हो, टैली ईआरपी यूज कर रहे हो, एनी सॉफ्टवेयर, योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मस्ट हैव अ फीचर ऑफ ऑडिट ट्रायल. सर ऑडिट ट्रायल का फीचर का मतलब क्या होता है? ऑडिट ट्रायल इज अ फीचर बाय विच ऑडिटर कैन लुक इनसाइड योर सॉफ्टवेयर कि इज इट मैनिपुलेटेड वन और जेन्युइन वन. मतलब हम लोग, जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं. मैं क्यों बताओ मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कंप्यूटराइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिफरेंस क्या है? वेयर मोर विजिबिलिटी इज देयर? मैनुअल में. मैनुअल में आई कैन स्टार्ट सीइंग द एंट्री फ्रॉम जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से पीएनएल, पीएनएल से बैलेंस. आई कैन ट्रेस द ट्रांजेक्शन इफ इट इज मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कैन यू ओपन द कंप्यूटर एंड सी इट इनसाइड? व्हाट इज हैपनिंग? विल यू बी एबल टू सी द ट्रांजेक्शंस? ये सब कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज में हो रहा है. फिर ऑडिटर कैसे भरोसा करेगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर? अगर मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते तो भैया मैं डायरेक्टली अपना जो हमने शुरू में लॉ पढ़ा अपनी लाइफ टाइम में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जनरल लेजर, ये वो सब देख लेता था. मतलब ऑडिट ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रेसिंग द ट्रांजेक्शन राइट फ्रॉम इट स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, वेयर इट इज पॉसिबल मैनुअल, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल हम लोग टैली में क्या करते हैं? एक एंट्री डालते हैं, जैसे एंटर दबाते हैं ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट अपने आप अपडेटेड. लेकिन वो कैसे अपडेट हो रहे हैं, क्यों अपडेट हो रहे हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन कहां पे जा रही है? कैन यू ओपन द कंप्यूटर एंड सी द प्रोसेसिंग? ऑडिट ट्रायल इज दैट फीचर. 1 अप्रैल 2023 से एवरी कंपनी इन इंडिया विच इज फॉलोइंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मैनर, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करो, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एक फीचर होना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑडिट ट्रायल, बाय विच द ऑडिटर कैन ट्रेस योर ट्रांजेक्शन राइट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट. चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, टैली हो, कुछ भी हो, जैसा भी सॉफ्टवेयर हो. पहले ये एक्चुअली अमेंडमेंट आई थी 1/4/2022 से, इट मींस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, सो मेनी कंपनीज वर अपोज टू दैट बिकॉज चेंजिंग द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज टू कॉस्टली फॉर द कंपनीज. तो उन्होंने डेफर करवाया, तो ये 1 साल डेफर हुआ. तो पहले ये अमेंडमेंट आई थी मई में डेफर होने के बाद ये अमेंडमेंट आई दिसंबर में कि भैया नाउ इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020. मतलब ये फाइनेंशियल ईयर से, कमिंग फाइनेंशियल ईयर से योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मस्ट हैव अ फीचर ऑफ. इसका मतलब हम लोग ये कब से चेक करना शुरू करेंगे? 1 अप्रैल 2024 से, क्योंकि ये प्रोविजन ही एप्लीकेबल कब से है. तो कंपनी नीड्स 1 ईयर टू अप्लाई ना. तो उसके बाद जब अपना 1/4/2024 में ऑडिट होगा नेक्स्ट ईयर, देन वी विल चेक दिस पॉइंट. दैट इज द ओनली रीजन रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट में आपको ये नहीं दिखेगा,
क्योंकि ये रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट 2021 फाइनेंशियल ईयर की है. इट इज ऑडिट रिपोर्ट ऑफ विच फाइनेंशियल ईयर? 2021. यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट है 31 मार्च 2021 की है. दैट इज द रीजन यू आर अनेबल टू सी दिस पॉइंट्स हियर. ये रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है सारी. And you can see the 3 points are there. Those 3 points which I showed you, you can see the first point, impact of financial position. फिर ये दो वाले point थे, derivative contract, and the third one is what? Delay. These points you can able to see because they were amended in 2019. But ये जो 3 amendment मैंने तुम्हें last में लिखाई हैं, what are the 3 amendments? D, E and F. These are recently concluded amendments. So now that brings an end to your section number 143. Subsection 3. Clear है? Done. So that's it for today. Remaining अपन कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? Thank you so much.